Under the CC system, evaluation of students is continuous throughout the academic year. This is the only type of अच्छा 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 evaluation that carries throughout the year and throughout the student's learning journey. Teachers conduct अच्छा regular अच्छा assessments, class tests, ठीक है सर quizzes, different projects, हाँ 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 also ओके सर including ओके ओके holiday homeworks and classroom participation, and observe students हाँ as हाँ well करते and understanding हाँ their हाँ हाँ progress सर through the हाँ year. सर So continuous evaluation allows the teachers to identify the ओके learning ओके gaps at the right time and give them feedback and support timely. So CC includes four things. CCE includes observation, interviews, self-assessments, and all types of other tests which conduct in the classroom. So, observation is basically when a teacher starts to observe students during the classroom or classroom activities, during the classroom discussions and group activities, which reflect many of their strengths and weaknesses, which further help us to work on them. And interviews basically stand for conducting one-to-one or one-to group interview sessions on various co-curricular and curricular topics to know where the students shine and where they can shine. And self-assessment stands for helping students to self reflect and be conscious about what they learn. If we give individually designed self-assessment to a child, so he can attempt that test and he can help have self reflection, which will make him conscious about what level of learning he has achieved till now. Then different types of tests includes your class tests, periodic tests, and half-yearly tests that happen throughout the year. So now, as you can see in the top left image, our teacher has provided students with a remedial worksheet so that students can cope up with the required competencies. An image to the right shows how I am helping a child to improve their comprehension through picture reading and forming sentences. The bottom left image shows the teacher explaining about the importance of social interaction in our lives and helping a child to participate in the play activities and be more socially active. The child which the sir is helping to participate in game or social play is not usually so much active and included in the different type of sports. So sir have found this wonderful opportunity during the games period. So he's making him understand that getting included in the game or social play is as important as getting good in studies. And then the last bottom middle image shows how a teacher is giving remedial lessons to students who need practice in pronunciation of Hindi language. And many of us might face this situation, and I suggest to all my fellow teachers to use similar methods to overcome these scenarios. It really helps. Then individualized educational plans and personalized learning. Basically, individualized educational plans help us directly in creating a personalized learning environment for the child. So it is a personalized document which contains details of the students, short-term and long-term goals of the students, and what kind of difficulties the student was facing, and a step-by-step intervention and solution to that, which we will implement during the classroom activities. So it serves as a comprehensive roadmap for educators, parents, and specialists to collaboratively support the students' academic, social, and emotional development. For example, a child who is really excellent in art and craft, who participates in all co-curricular activities and is always keen in writing stories and poems, but is not much polished in the articulation or the pronunciation of the words. So, according to the Gardner's theory of multiple intelligences, this child is well equipped in the interpersonal skills as he is able to write different stories and poems, but he needs to get his interpersonal skills polished, which will help him to speak up or to recite the poems and the stories. So now, as teachers, we can include such activities which give students like him more opportunities to get engaged with the other students, which can be in the following ways. One of them can be peer learning, another can be community lunch, playing in groups, group projects, group discussions, and other activities like that. Activities like these will give ample opportunities to a child to spread their wings to the widest. Okay, so an IP document includes the following components which help a lot in planning the student's learning journey. First can be assessment of the individual needs.
First, we have to assess during the classroom by giving an additional worksheet or an interventional worksheet, which will help us identify the learning gaps the student possesses. Second is personalized learning goals. We have to personalize the learning goals according to the child and then work on them accordingly. Customize instructional strategies, customize assessment strategies as well, and individually curated educational activities. So individually curated educational activities, we have some following examples, which can be reading comprehension activity to build comprehension of a child who is facing difficulty in reading directly from the text. So we can start first by picture reading, then by picture combined with text, and then completely move on to the text part. Then we have math problem solving games to foster problem solving skills as well. Because some students who are good in EVS and language may or might face difficulties in problem solving topics such as mathematics. So we can start by including them through gameplay. So they will also be interested to be included, and then we can foster those skills, problem solving skills basically, in the students. Then we can have writing fluency exercise. As we have speaking fluency, language fluency, we also have writing fluency exercise because some students are not able to think and write with the same fluency. Many students might think in a fluent manner in their brains. The thinking pattern is very fluent, but not when they write. They might have different type of difficulties or errors while writing. So we can have writing fluency exercise also, and then role-playing game for developing social skills, multi-sensory integration activities which include more than one senses. For example, if we teach through a chalk and talk method, a child's only ears and eyes are the senses which are included. So we can take the child into a projector enabled room, and then the child will be engaging more than two or three senses, which will be a very rich experience for them to learn. So through a well-developed IP, we get a lot of student data, which helps us in tailoring better learning methods, which provide students a blissful and a personalized learning environment. And IP directly results in personalized learning, which improves the child's classroom experience. So now, technological integration. So this comes handy with a variety of learners present in a classroom, because there can be a lot type of learners who are not able to catch a certain concept or catch a certain kind of competency through only classroom based education. So we can have some children visit the computer labs, use the computers tech, and use the projector rooms for them to understand the lesson better. So in the digital era, many students have made a habit of consuming media through devices during the COVID lockdown. And now teaching them with boring textbooks has become a hassle for us teachers. So here comes a savior as the technological aids present in us. So which can include projectors, Chromebooks present in all the PDs, computer, and many other devices and experiences through technology. So for example, as you can see, our teacher is helping the students to understand about rockets and space through videos, which is only possible because of technology. Some more examples, as you can see, the students are involved in learning through technology, and it's a really rich experience and different than classroom learning. So now comes collaborative approach. A student-based automated remedial teaching system can be taken advantage of by the teachers to reduce their direct and continuous involvement, which will in turn save a lot of time and energy. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं, अगर आप ही हर समय बच्चे के पास जाके उसको डायरेक्ट इन्वॉल्व होके अपना टाइम एंड एनर्जी देके अगर उसको रेमेडियल लेसन दे रहे हो, रेमेडियल क्लास के लिए उसको अप्रोच कर रहे हो, देन योर टाइम विल बी डिवाइडेड इन अ लॉट ऑफ वेज. So one thing that we can do is we can automate this remedial system, and how we can do that with the help of collaborative approach. We can sensitize students in the same classroom who can help their peers, their friends, or their classmates in different topics and understanding different concepts, so that we as teachers don't need to directly and continuously get involved with the students. So now comes parental involvement. Parental involvement is a must have in a student's remedial learning, because if the parent is not involved, a teacher alone can only handle the learning part at the school, and the learning should be continued until the home. So
involving parents is a must to gather student insights. What characteristics the student possesses at their homes, what behaviors the student shows at their homes, is only we can get that from parents. So it can be that a student might be shy in school but open at home. अगर हमको ये चीज़ पता लगती है कि बच्चा घर पे खुल के बात करता है लेकिन स्कूल में काफ़ी शर्मा के रहता है, तो ये हमको कौन बताएगा? सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो हमको ये इंसाइट दे सकते हैं. एंड एज टीचर्स एंड एज the teachers in the school, we need this insight a lot, and then we can work on it accordingly. So, learning your classrooms. Now, keeping the above mentioned insights in mind, we will develop a student suited plan and involve parents as well, so that learning continues across students' daily life from school to home. And now, with this, the parent student relation is also improved a lot. Parents become a more active member of their child's learning journey when we involve them in their child's remedial learning. And the parent teacher relation is also improved by parents and teachers working in collaboration and bring a efficient and a rich experience for learning. So social and emotional support. It all starts with social inclusion. As you can see, the teacher is helping a child understand the importance of social play in the right image. We have also seen that earlier. And in another picture, the teacher is helping the student to socialize through playing in groups. Now, sensitizing students, it is also a very key point to keep in mind. In this picture, the teacher found a very good opportunity to induce sympathy as well as empathy in the students while applying medicine to this child who got hurt while playing. That all of you are a family and everyone is responsible to take care of each other. And instilling these values along with remedial teaching will only give us a fruitful ending to the learning journey. So transition to mainstream. Our child is not always in need to receive remedial lessons or remedial activities in the school. So we have to transition that child to mainstream and make him self-dependent. So reducing direct involvement is one way, and developing the core competencies in which the child lacks is another way. And making students self-sufficient and focusing on the pillars of strength, which will help the student stand on its own. And the least we can do as teachers is being always available and approachable to all the students in school. Thank you. Thank you, sir. As it is said, children are like wet cement. Whatever falls on them makes an impression. I would now request KV Chitranjan to please share their presentation on classroom management and classroom skills. KV Chitranjan, please. Thank you, ma'am. Good morning, all the principals of different Kendriya Vidyalaya and all the senior teachers. I am Shweta Nigam on the behalf of Kendriya Vidyalaya Chitranjan going to present my topic, that is classroom management and inclusive classroom. Jayanti ma'am, not able to hear anything. KV Chitranjan, please share your presentation, ma'am. Yes, ma'am. One second, ma'am.
हाँ, sorry, ma'am, for the disturbance. Is it visible to everyone? Not yet visible. I cannot see. Maybe visible नहीं है. नहीं है. Stop sharing. Otherwise, may I request the other school principal? I request principal sir to please suggest. Like otherwise, may I Other request school को Durgapur start कर दीजिए. CMERI to please continue. After that, we'll come back to yeah, please. So I'm requesting Kendriya Vidyalaya CMERI to please continue with your presentation, and we'll come back to Chittaranjan later on. हाँ? CMERI please आप continue करें. चित्ररंजन पे हम लोग फिर वापस आएंगे. नीरज सर प्लीज. Yes, sir. Good morning to all of you. Yes. Good morning to respected cluster in charge and all my all the other principals for other KVs and my senior teachers. My name is Sonia Sharma. I am from KB CMRI Durgapur, and I welcome you all on the behalf of my school in the fourth Nipun meeting for the session of 2023 and 24. On the behalf of my school, I'm going to represent the today's topic, which is TLM, developing of TLM and its usage. So let's get started with our slides. Okay, so let's get started with the introduction. So if we talk about the traditional classroom teaching, there is hardly any scope for the children to interact with the teacher and teaching learning material. So teaching became very monotonous, and students have to rely only on the rote learning. So most of the time, the classroom teaching is dominated by the lecture method. Only some essentials are used like chalk, duster, blackboard. Teaching learning material are hardly used in a classroom. When it is used, it may not be context specific. So for this regard, one of the major aim of the NCRT is designing, providing for, and enabling the appropriate teaching learning system that could realize that identified goals. Learning has shifted from response understanding to knowledge, acquisition, construction of the knowledge. In this context, the duty of a teacher is to provide appropriate environment where the child will construct his knowledge by interacting with his physical and the social environment. So this was about the introduction of the TLM, how was the traditional classroom used to be, and now the concept which we are taking in the context, which is TLM. And now we will get to know about the TLM, as I know and you already know this. What is the TLM? So we'll discuss. I get
to know about my presentation is getting changed or not. Please let me know. Yes, now it has changed now. Okay. Yes. So we are talking about the TLM. So TLM is an acronym used for teaching learning material. TLM is a spectrum of educational material that teacher uses in the classroom to support specific learning objective, to help student to improve, reinforce special skills, and sometimes to make learning fun. So in short, we can say that teaching learning material are must for the constructive knowledge. Teaching learning material are the aids to used by the facilitator to help him or her in facilitating lesson effectively. So as we know what is TLM and we are also using in a classroom. So I want to go on the next slide. So these are the three E's of the teaching learning material. One is educate, second one is enhance, and the third one is extended learning. If we get about the educate, so it's a very basic word that if I want to teach a topic and a teacher want to teach a topic, so we can educate our children by TLM. And if we talk about the enhance, so whatever the students know, by using the TLM, we can enhance the knowledge of the student. And extended learning, if we talk about this, so by the TLM that we are using in the classroom for the any topic, so by using the TLM, student can keep in the mind for the longer period of time. So these are the three E's which we are talking about. The first one is educate, second one is enhance to the knowledge, and the third one is extended learning. Yes. So if we talk about the need and the importance of the TLM, so first and very important thing is make the lesson interesting. Whenever we are teaching the classroom, if we only use the book and if we only draw on the board, so sometimes it becomes very monotonous. Students keep boring in the class. So whenever we give them any 3D model of any topic, so it makes the lesson very interesting. And by using the TLM, the whatever the topic we are teaching them, it's become very easy, and students also show the interest about the topic, and it also help learning to remain in the minds of the student for the longer period of time. As we also discussed in the last slide, extended learning, so the meaning is the same, that if we use the TLM in the classroom, so it remain in the minds of the student for the longer period of the time. And if I talk about the next point, what the TLM is working for the student, so it helps the teacher to deliver their lessons successfully and easily. Enable teachers to express intended concept of the learning effectively. If I talk about the one example for the given point, so in our school, we also give the student to make the ATM. So this is the picture. Yes, on the right side of the screen, you can see that student is holding the ATM. So this was the TLM for the science innovation TLM, and the student make their own TLM, and we also make our we teachers also make the TLM for the ATM, and some students know about the ATM, so they also make it, and we also tell the student to join to go with the parents and know the concept how the ATM works. So let's back to our content. Yes, so we were talking about the TLM importance. So it can be, we can say that TLM enables teachers to explain intended concept of learning effective. As I told you, if I want to teach the ATM, so by using the TLM, small model can be presented in front of the student, and to connect with real life, we can also tell the student to go with their parents and how the ATM work, we can go there. And the very important thing is the TLM should not be very expensive. It should be locally available everywhere, and it should be cheap. And TLMs are easy to carry. They are portable and enable everyone in a classroom situation participate effectively. TLM should be like that. Everyone should understand and should participate effectively. And the last one is a help student to relate what is being taught in a real life situation. If I'm talking about whatever we are telling them, it should be in a real life situation.
So there were some top points about the need and the importance of the TLM. So let's go on the another slide. This is the slide for the types of the TLM. So these are 4 to 5 types which we are going to talk about. The first one is a visual aid. So as we know that blackboard, posters, flashcards, presentation, printed textbooks, graph and infographics are some of the visual aids and we usually use in a classroom. The second one is the audio aids, which are radio, tape recorder, and CDs. The third one is very important teaching aids, which is audio visual aids. So before I read it, I want to tell you that whenever the student use most of the senses, as we know that we are five senses, and if the student is using most of the senses, the teaching is extended and teaching is very much useful, because when student use most of the senses, teaching is done with very sincerely. So in audiovisual aids we use video recordings, films and documentaries, and virtual classrooms are language laboratory are for the language of the student. This might be for English, Hindi, and their regional languages. It improves the speaking as well as their listening skills. The last one is computer assisted learning, in which pre-recorded DVDs we are used, CDs, online quizzes, ebooks, and podcast blogs are used. If I say that what the good TLM is, so first one is that TLM should be directly related to preschool's curriculum policy. As we know that most of the schools are from the first, and student come their preschools from the other sources. So whatever the TLM we are representing in a classroom, it should be preschool curriculum policy, because the students are very small. They come in a class one, so whatever they have learned, very basic thing we have learned in their preschools, so our TLM whatever we are making, it should be directly related to preschool. The second one is supported inclusive curriculum, as we support inclusive education in our KBs. So whatever the TLM we are making, if our classroom are having some of the students which are special, so whatever the TLM we are making, it should be inclusive curriculum. Familiarity with TLM with assist with presenting new ideas. Whatever TLM we are using, they should always assist with presenting the new ideas. The third one is the are relevant for the age of the children or the student for whom they are selected. So as we know that we are the primary teachers, we teach from 1 to the 5th, and so whatever the TLM we are making, it should not be for the secondary or the above secondary. They should be basic, that every age group of the children in a student which we are showing, they should be relevant for them. And the last second is whatever the TLM and the characteristic of the good TLM is. We should also provide the opportunity for the children and the student to make their own TLM, and whatever we are making, they should know how to handle it, how to use it. And as I have already told that we are teaching very basic students from class 1 to the 5th, so TLM should be self-explanatory, because we cannot make very hard TLM that student can't understand that. So the last one and very important is the TLM, whatever we are making the classroom to present any topic, the TLM should be self-explanatory. Yes. So I just want to conclude by using these 4 to 5 points, that what are the conclusion about the TLM. So most of the time we use books and simple drawing the classroom. So TLM should be offered in the classroom, which is very important because it makes our topic very easy, very effective. Teachers must be familiar whatever the TLM he or she is making. Each student should have an opportunity to handle the TLM. Yes, this is the conclusion that we are on, that whatever the TLM we are making, student should know how to handle it much better, and ensure the learners as well. And the last one is proper use of the TLM facilitate learning. So this was the content of my presentation. Now we will see some of the pictures of our Vidyalaya to practice the TLM.
So you can see on the screen of yours, this is the some of the TLM in the Hindi grammar we have prepared, and some of the TLMs are prepared by our students. So these two are for the Paryayavachi. So whatever the ideas the student have, they have there in mind, they present their ideas over it. And so these are the pictures for the Hindi grammar. Yes, this is again for the Hindi grammar TLM, Sangha and Sarvanam and for the Viramchan. And I want to include one point over here. For the Viramchan, student also used the clay to make some of the full stop and whatever the student can make. They use clay to make different signs. So this is a picture for the music TLM. A student made whatever the instrument we use in our assembly. So they made some of the pictures, some of the 3D models of the instrument. This is from the EBS TLM to sense for the sense organ. Student prepares some of the TLM, and on the right side you can see that this is the dustbin made by our one of the student of the Vidyalaya. For science and innovation TLM, water dispenser was made by one of our student of the Vidyalaya. As I also told that ATM, for the ATM TLM, student made their own ideas and they show the TLM for the mathematics. And yes, these two pictures are for the mathematics TLM for representing the place value and the face values. And also these are some pictures by in which the 3D pictures are made by dot papers. And yes, in our Vidyalaya, we have a mathematical garden, and also the student made the 10-gram project. In these pictures, brick surface patterns of the TLM topic was given to the student. The student also prepared it, and we also helped them to enhance their learning and to tell them the timing and the capacity and long short. For the primary student, for the class 1 2 student made the clock to know the how to tell the timing. These are some pictures from our Vidyalaya in which students are getting knowledge about the shape and sizes and how to short the things. Yes, this is the other picture in which some of the students made the balancing weight scale. And these are some pictures for the multiplication, how we can make the multiplication easy, how we can understand by using the TLM. And this is a salad packing activity which our school conducted. And for the storytelling, our school teachers also prepared TLM, puppet TLM to demonstrate a story. Yes, this is again for the TLM for the English. So thank you so much from my side again. And I am very much glad that I am the part of this Nipun meeting for the very first time. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to ask KV Chitranjan if they're ready with their presentation. Yes, ma'am. Please, KV Chitranjan, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, all the respected principals and respected senior teachers. I am Shweta Nigam on the behalf of Kendriya Vidyalaya Chitranjan, going to present my topic, that is classroom management and inclusive classroom. Is it visible, ma'am? Okay. Thank you. First of all, I am going to discuss what is the classroom management. Classroom management is essentially the way in which a teacher creates a set of expectations that students must adhere to. It includes a set of routines, consequences, and rules which help to create a learning environment in which students can learn in an effective manner. So basically, in a well-managed classroom, there are some rules and regulations, some do's and don'ts, which are created by the teacher
with the involvement of the students, and the students have to follow those to maintain the decorum of the classroom. The ultimate goal is to ensure that both the students and the teacher get the most out of the classroom experience. Good classroom management should aim to create an organized and functional environment for the teacher and students. Next is classroom management. It refers to the steps teachers take to organize their classroom for optimal learning. It helps to engage the student learning. It helps to minimize the disruptive behavior. It helps to encourage the positive behavior in the classroom. Excuse me, ma'am, ये जो प्रोजेक्ट कर रही हैं आपने, it is not visible. आपने जो स्क्रीन शेयर कर रही है, it is not visible. Sorry, sir. Now is it visible? ये बेस्ट होता अगर आप पीपीटी बनाकर शेयर कर लेती, then it would have better. Is it visible now? Yeah, now it is visible, ma'am. Okay. Thank you, sir. Next one is how to create effective classroom management. For creating an effective classroom management, a teacher should build a positive relationship with the students. Teacher should respect the students, keep students involved in the classroom activities, present engaging lessons so that student cannot get bored, manage your transitions, acknowledge student success. If student gets success in any field like sports, art, and anything, a teacher should acknowledge that success in the classroom in front of all the students so that the other students can also learn and try to and get motivated. Teachers should also arrange the classroom so that to minimize the disruptive behavior in the classroom. Next is results of positive classroom management. What are the results of the positive classroom management? These are, it fosters the student involvement and cooperation in classroom activities. It establishes a productive work environment and more teaching learning time. It builds a good relationship between the teacher and the student. It helps the teacher to prepare for the workforce, and safety concern is also achieved through the positive classroom management. Here are some pictures of classroom corners. These are the TLMs in our classroom, which help the student to get the knowledge of different like new words here and different shapes and numbers. Here you can see the student enacting the English drama in our classes. It is also a way to involve all the students and students get interest in all these activities. So it is also help in maintaining the classroom in a positive way. Here is a learning corner. These are also some printed material available here, which the students get knowledge from here also. These are some fun activities performed in our classrooms. Students get more interest in all these activities. These fun day activities are organized on the Saturday. These are here the students are doing some color activity. The teacher is also helping the students how to create some different crafts in the classroom.
Now, what are the classroom expectations? These are some rules, consequences, rewards, and procedures. By creating the rules and procedures in the classroom, a teacher will be more able to manage the class in a positive way. Here are some examples of classroom rules. These are like classroom code of conduct, that how the students behave in the classroom, how they maintain the decorum of the classroom, about the discipline they should follow in the classroom. Now, next is characteristics of effective classroom rules. These are created with student involvement consistent with school rules. These rules should be understandable to the students. These should be doable, manageable, stated positively by the teacher to the students. Now here are some classroom procedures. These are like morning procedure you can see, and the dismissal procedure, like what a student have to do when he come to the school and what he has to do when he leave the school. These should be explained very clearly by the teacher to the students, and it also help to reduce the discipline issue in the classroom as well as in the entire school. Now my second topic is inclusive classroom. So, what is inclusive classroom? An inclusive classroom is a general education classroom where students with and without learning differences learn together. Inclusive classrooms are welcoming and support the diverse academic, social, emotional, and communication needs of all students. Here you can see learning room, no bounds. What is the importance of inclusive education? Inclusive system provide a better quality education. Through inclusive education, school provide the context for a child's first relationship with the world outside their families, enabling the development of social relationships. It also respect and understanding grows when students of diverse abilities and backgrounds play, socialized, and learn together. Inclusive education is an approach to educate all children who are at stake of total involvement in the education system. It expects that all learners learn together through access to common educational provision. The parents, community, and teachers all need to be cooperative towards the diverse need of children. What are the key points of inclusive education? These are the that admission of children with disabilities in a regular school with necessary provision. The education system will make suitable modifications to suit the need of children. All the required support will be made available to the students in the regular classroom. Now, next is classroom management strategies for inclusive classroom. What are these strategies? This is inclusive classroom management is a process that creates a supportive learning environment for students regardless of their background, ability, and identities. The concept of inclusivity is to make every student valued, respected, and supported in their learning journey. Now, next is creating a reinforcing classroom environment. What is this? It is creating a reinforced classroom environment can be used to teach new skills, teach a replacement behavior for an interfering behavior, or the increase in task behavior. Next is focusing on structure and routine. Following a routine and maintaining a structure can help us to create a safe and proper learning environment in the classroom. Increasing students' locus of control, encouraging students to take responsibility for their own actions, and in case of wrong action chosen, guiding them to the better alternative. So basically, here if a student is committed to any mistake or any wrong action he's done, so we have to guide him that no, this is not a better way to do this. You can choose some other alternative to do this. Next is solving students' mistake by involvement. Here, how can we uh, correct the student who has taken a mistake? That is, identify their mistake and shortcoming and find out their solution and appropriate activities according to their mental level and practicing them individually with that
child and also encourage his and her classmate to involve that in that activity to correct or modify his or her negative behavior or shortcomings. What is the conclusion of the classroom management? It is by implementing these strategies to manage the classroom can provide a safe and interactive learning environment for the students. The key ingredient in this approach is teachers' fidelity to the behavioral expectations that have been established for the students. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. I would now request KVCRPF Durgapur to please share their presentation. KVCRPF. Okay, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, sir. Ma'am, my screen is visible? Yes, sir. Okay, ma'am, thank you. Good morning to the cluster in charge, sir, Shri Santosh Soni, sir, Principal KV Asansol, and all the KV principals, and Shri Vinod Yadav, sir, KV Principal CRPF Durgapur, and my senior PRTs, HM, and my dear colleagues. I, Shubham Mishra, on behalf of KVCRPF, I would like to thank venue principal sir, Shri Santosh Soni sir, for providing us this opportunity. The topic for today's fourth quarter Nipun Mid topic presentation is measures taken to develop FLN. So, what is the full form of FLN? That फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन हिंदी भी से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अथवा संख्या ज्ञान एंड निपुण मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी इन हिंदी भी से संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। अब हम समझते हैं एफएलएन क्या है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पेश की जिसमें एफएलएन नामक एक कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 से 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को भाषा और गणित की शिक्षा प्रदान करना है। एफएलएन मिशन भारत के सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है और इसका लक्ष्य 2025-2026 तक छोटे बच्चों के समग्र विकास इंग्लिश विषय थ्रू आउट डेवलपमेंट में मदद करना है। यह मिशन नई शिक्षा नीति की स्किल इंडिया यानी निपुण भारत के पहल का हिस्सा है। अब एफएलएन का उद्देश्य क्या है? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? चाहिए मैं अभी प्रोनाउंस रीड कर रहा हूँ। एफएलएन का उद्देश्य प्लीज कंफर्म विद मी। चेंज नहीं हुआ है सर। चेंज नहीं हुआ है। आप अपने स्कूल में क्या करते हैं इसी को डिस्कस कर दीजिए सर। थियोरेटिकली नहीं जाना है, प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं डिस्कस कीजिए। और ये पावर पॉइंट जो है उसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में प्लीज। यस मैम। Sir, okay ma'am. So how to implementation in our academic plan? So at first we development of oral language by encouraging conversation. हम बच्चों से कॉन्वर्सेशन करते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है हमारी बच्चों से, जिससे बच्चे अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाते हैं हमारे साथ। चाहे वो कोई भी वो खेल कूद में एंजॉय करते हैं या कोई समस्या आती है तो वो कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हम उनको इनकरेज करते हैं कि कुछ भी कहें वो अपने व्यूज को शेयर करें। हम अपने क्लास बच्चों के साथ मेंटेन करते हैं आई कांटेक्ट, जिससे बच्चे एक क्या वो कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारे साथ, जिससे वो कुछ भी हमसे कहने से शर्माते नहीं है। हम उनको इनकरेज करते हैं कि स्पीक लाउडली, कुछ भी अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जोर से बोले, जिससे लास्ट के बच्चों तक वो आवाज आए बच्चों को और प्रॉपर उनकी ऑडिबल हो उनकी आवाज। और हम उनकी जो भी इंफॉर्मेशन वो लेके आते हैं हम उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्कस भी करते हैं और हम सुनते भी हैं और उनसे हम लिसनिंग स्किल्स को भी
अटेंड करवाते हैं, लाइक कि हम मैगजीन दे देंगे या कोई बुक्स रीड कराएंगे तो हम उनकी लिसनिंग स्किल को भी चेक करेंगे कि एक बच्चा रीड कर रहा है तो दूसरा बच्चे ने क्या सुना, कहाँ पे वो बच्चा है, पॉइंट आउट करवाते हैं कि बताओ हम कहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो इससे उनकी लिसनिंग स्किल भी इंक्रीज होगी। और जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हम क्वेश्चन ऑफ द डे कोशिश करते हैं कि बच्चों में दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके लिए क्या क्वेश्चन ऑफ द डे हो सकता है, और हम बच्चों को उस कंसेप्ट से हम कुछ वर्ड सिखाते हैं। वी टीच कंसेप्ट वर्ड। इन literacy skill development activities, there are so many activities we do, like rhyme recitation, we do extempore poetry recitation. Students are encouraged to do this type of activity. phonic awareness भी हम कराते हैं, लाइक कि साउंड जो होती है हमारी इंग्लिश में, ए को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इस तरीके से हम सिखाते हैं बच्चों को। बच्चे खुद इनकरेज होकर बोलते हैं, सीखते हैं। उनकी हम रीडिंग हैबिट को रेगुलर ही इंक्रीज कराते हैं, जिससे बच्चा बोलना सीख सके, पढ़ना सीख सके, हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को ढंग से प्रोनाउंस कर सके। और द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेल द टेल एक्टिविटीज। हम बच्चों से एक एक्टिविटी भी कराते हैं, लाइक कि हम बच्चों को एक टॉपिक दे देंगे और वो उसके बेसिस पे कोई स्टोरी सुनाएंगे। मे बी इट विल लाइक अ ग्रुप स्टोरी, 2-3 बच्चे आके वो स्टोरी रिसाइट करेंगे और हम बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरीज। एंड डे टू डे कॉन्वर्सेशन आर द रेगुलर पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी। हम बच्चों से डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्या वो डेली फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो शेयर करते हैं अपने टीचर्स के साथ। एंड दे आर वेरी हैप्पी टू शेयर विद अस। एंड वी वुड डू रोल प्लेस इन आवर टॉपिक्स। For example, in Hindi, we do some top chapters by like role playing. We call students in our class and we will tell कि आप कोई भी एक टॉपिक पे रोल प्ले करें, जो भी आपका सबसे पसंदीदा पार्ट है या इंग्लिश में चैप्टर है उस पर करें। जैसे एक इंग्लिश में आई टीच क्लास 5, वन टॉपिक आई टीच क्लास डिस्कशन। तो बच्चों ने एक टीचर का रोल प्ले करा था और स्टूडेंट का रोल प्ले करा, इससे बहुत एक उनकी एक्टिविटी डेवलप हुई, इंटरेस्ट भी आया उनको उस टॉपिक में, समझ भी आया। पपेट शो भी हम विद द हेल्प ऑफ टीएलएम वी डू पपेट शो। एंड वोकेबलरी एनरिचमेंट एक्टिविटीज कराते हैं, लाइक डम शराड। समटाइम्स वी डू सम जेस्चर्स एंड आस्क चिल्ड्रन टू व्हाट इज दिस, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट देना किसको है, वो तो बोले आपको देना, एंट्री कर देंगे हम तो दत्ता दा के पास गए। Like if I am doing this, so students will say I'm writing with pen, I'm writing with pencil. So this kind of activities we do in our classes. And next thing is tell me your favorite activities. So when we ask in our class कि आपकी favorite activities क्या क्या हुई है, so they say many activities like they like to play, they like to take interview. Most of the students in our school like to take interview with other students and with the teachers. This will enhance in the vocabulary, in the speaking skill, communication skill increase होती है। And we provide worksheets and do storytelling. And with the numeracy skill development activities, we do various kind of activities like identifying numbers. हम बच्चों से आइडेंटिफाई करवाते हैं नंबर। एंड वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स। फाइंड मिसिंग नंबर्स, लाइक अगर हम एक नंबर के बीच में गैप रख दे 1-3-5, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट विल कम आफ्टर 1 एंड व्हाट विल कम बिफोर 3, लाइक दिस। एंड वी डू सॉल्विंग एडिशन प्रॉब्लम बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव 2 pencil and 3 rubber and will ask how many total are them, say, so the children will count and add and tell me the answer. And next is do solving subtraction problem. Solve word problem, अगर हम उनको statement के through बोले कि example देके कि we have 4 apples, 5 mangoes and 3 oranges, how many total fruits are them, then they solve by adding, counting, addition and counting.
and one-to-one correspondence and pre-number concepts we teach. And we teach math in daily life. Like I already said, we give daily life example जो बच्चों के रेगुलर यूज में होते हैं, उसी के बेसिस पे हम एग्जाम्पल को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और इस तरीके से हम उनको मैथ की एजुकेशन देते हैं. वर्कशीट भी प्रोवाइड वर्कशीट एंड ऑर्डर 11. क्या है ये? अब हम कुछ एफएल रिलेटेड गतिविधियां होंगी हमारी जो हमने करवाई जाती है हमारे लाइक वी डू साइट वर्ड स्कैवेंजर हंट. इन दिस वी क्रिएट अ स्कैवेंजर हंट वेयर स्टूडेंट्स सर्च फॉर अ साइट वर्ड around the classroom or school, and वो सब we दफ्तर provide a सर list ऑफिस of वाला site करेगा, words ऑफिस वाला से and इधर आता है. students have to find and read them. This activity helps तो in नहीं है both तो sight word recognition and किसको reading दफ्तर सर को fluency. दीजिए, दफ्तर सर Here आपको are the देखेंगे some अभी वही है examples तो. pictures. And another activity is story retelling. We do अब दीजिएगा तो हम do the यहाँ short story सुनिए, appropriate for the आपके grade level. समझ हम यहाँ रख बच्चों के देंगे, grade बाकी अब level for देखिए example कराना अगर क्या हम कराना class है. second के बच्चों के लिए short story retelling करा रहे हैं तो हम उनके grade के according हम क्या करेंगे. कौन फॉर बोल दिया? एग्जाम्पल हम उनको टॉपिक दे देंगे माँ का, वो बच्चे माँ पे बहुत अच्छी स्टोरीज बना सकते हैं, कविता गा सकते हैं. अच्छा हम पूछते एंड हैं कि स्टूडेंट्स तो ये रिटेल द करना स्टोरी क्या इन है, देयर इसको ओन ये वर्ड्स. बच्चे बताइए. अपने अपने शब्दों में स्टोरी सुनाते हैं. कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत वो है इस लेवल में एक्टिव हैं कि दे अच्छा. स्पीक इन देयर मदर टंग. बंगाली में भी बच्चे स्टोरी सुनाते हैं, तो इससे बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ हाँ सुनते हैं हमको स्टोरी. पता और नहीं, जो चीज कोई भी पता नहीं वर्ड्स में अगर उन्हें जबरदस्ती समझ हमसे नहीं आता करवाते तो तो दे हम क्या आस्क करेंगे? विद द रखने के लिए तो रख लेंगे, स्टूडेंट रखा द रहेगा स्टोरी और कागज से खो जाता है. कॉम्प्रिहेंशन पिछली बार वोकैबुलरी भी एंड खो स्टोरी गया. टेलिंग की स्किल्स इंक्रीज होती है तो बच्चों की. पिछला बार एंड नेक्स्ट एक्टिविटी इज हाँ दत्ते को word दीजिए, आप building with किसी को मत दीजिए, manipulators. कहिए कि We वही provide रखेंगे. students with letter blocks, magnetic letters or letter cards, or we say flash cards, and ask them to build words using their given letter, reinforce spelling patterns. This activity supports letter sound correspondence and word formation. And next activity is number 9, hopscotch. इस एक्टिविटी को सारे बच्चे करते हैं, फन डे में भी करेंगे, गेम्स पीरियड में भी करते हैं. इन क्लास when we have much space, then we'll do this kind of number line hopscotch. We create a giant number line on floor or playground by using chalk or tape. Students jump on the number by recognition, counting and sequencing. The next activity is measurement scavenger hunt. We give students a measurement scavenger hunt task where they need to find objects of different lengths, weights or capacities. For example, they might find something longer than their hand, heavier than a book, or container that can hold a specific amount of water. This activity develops measurement concept of and vocabulary. हम बच्चों को 1 लीटर की बोतल, हाफ लीटर की बोतल से बच्चों को हम मेजरमेंट सिखाते हैं कि किस में ज़्यादा पानी आएगा, किस में कम पानी आएगा. तो इस तरीके की एक्टिविटी से हम बच्चों में मेजरमेंट के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं. एंड नेक्स्ट एक्टिविटी वी डू लाइक मैथ स्टोरी प्रॉब्लम. हम स्टोरी के बेसिस पे रियल लाइफ स्टोरी बच्चों को हम बताएंगे तो मैथ्स में वो इंटरेस्ट लेंगे. बुकिश मेथड का यूज ना करके हम रियल लाइफ स्टोरी का यूज करते हैं, जिससे बच्चे खुद ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे आने के लिए रेडी रहते हैं. दे आर मच रेडी टू कम इन बोर्ड एंड डू द प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंगली, एंड इससे इनकी सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है. लास्ट इज द नेक्स्ट इज द पैटर्न रिकॉग्निशन. In our classroom there are so many pattern recognition like window, and we do some flowers like this in the slide कि पहले में हम बता रहे कि अगर फर्स्ट क्यूब, फर्स्ट स्क्वायर, डायगोनल हम वो कर रखे रेड कलर, देन ग्रीन, व्हाट कम्स आफ्टर ग्रीन, रेड. सो ये एक पैटर्न फॉलो कर हो रहा है. इस तरीके से हम बच्चों को बताते हैं. इससे उनमें पैटर्न रिकॉग्निशन और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. वो रीजनिंग लगा सकते हैं, अपना रीजन लगा सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग उनकी डेवलप हो जाती है इससे. एंड नेक्स्ट इज मैथ्स बिंगो. Math bingo. We create a math bingo game focusing on specific math concepts such as addition, subtraction, multiplication, facts. Students can participate their math skill while having fun in a game-based setting. एक तरीके से बिंगो हम करा देते हैं इन क्लास. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैगजीन राइटिंग. इससे बच्चे में हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. बच्चा अपने माइंड से खुद लिखता है. मैगजीन राइटिंग हम उनको कोई टॉपिक दे देंगे, शॉर्ट स्टोरीज बोल देंगे या किसी टॉपिक पे पैराग्राफ बोल देंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को बोल दें कि फ्रीडम फाइटर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, किसी आर्टिस्ट या किसी फेवरेट इंस्पिरेशन पे स्टोरी लिखना है, पैराग्राफ
So they write, and we say that we will publish in the magazine. They do poem writing, short story. इससे उनकी ग्रामर, क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल एनहेंस होती है. So thank you for my side. Thank you, cluster in charge KV principal Asansol, Sri Santosh Soni sir. My KV principal CRPF Durgapur, Sri Vinod Yadav sir, and all my senior PRTs and my colleagues. Thank you so much. Thank you, sir. As John Kennedy says, children are the living messages we send to a time we will not see. I would now request KV Panagar to please share their presentation on exit level assessment for classes 1, 2, and 3. KV Panagar, please. Yeah. Open the PPT. Good morning to all respected principal, teaching. Sorry. Yeah, it's audible, I think. Good morning to all respected principal, teaching, senior most priorities, and all my colleagues. I am Tanya from KB Panagar. I would like to thank to my principal sir to give this opportunity to represent this meet. Our topic is exit level assessment for class 1, 2 and 3. As we all know, there is PMS portal in which we have to register our student so that teachers can do assessment of their respective classes 1, 2 and 3. PIMS, that is Personal Information Management System, in which we have to fill all the... If it is not visible, I think. Is it visible now? For me, I cannot see. Yes, the presentation is not visible. Tanya madam, please present your present PPT presentation. Please share your presentation, yes. Can you share with the phone? Yeah, ma'am. Is it visible, ma'am, now? Yes, it's visible now. Okay. Yes, it is visible. PMS portal, which is Personal Information Management System, in which we have to fill all the essential data of student, their name, class, and their parents' detail also. We have to do 2 or 3 times assessment. First is entry level assessment. You can see here. Can you zoom in? Yeah, it's visible. We have to do 2-3 times assessment. First is entry level assessment, as Janti ma'am also told us about that, and the second is midterm assessment, and third is exit level assessment. We have already done entry level assessment and the midterm assessment. It will show this type of
DPS से कॉल आई मेल आया when you update entry level assessment and midterm assessment and now we have to assess exit level assessment we have to select we have to go to the assessment of for FLN we have to choose classes from here where you want to assess the children DPS से now my colleague Mr. Himanshu will conclude further स्टार्ट हो रहा है मैम लास्ट से देख रहे हैं फर्स्ट ठीक है ना Yeah, very good morning to all. I hope my voice is audible. DPS सर्च कीजिए ना वैसे पब्लिक आ गया Yes, it's audible. Himanshu, go ahead. Yes, first of all, I would like to introduce this PIMS portal. Basically, it is Personal Information Management System, in which we have to fill all the details of the students of our classes first, second, and third. Respective class teacher will fill the details in this portal as the class first level. There we have three classes basically: class 1, class 2, and class 3. 13 तारीख है ये Here we have the language proficiency and assessment abilities for classes 1. 4 5 Oral language ability English, writing ability in English, reading ability in English, and numeracy skill. After मौखिक भाषा क्षमता हिंदी के लिए और लेखन क्षमता हिंदी और पठन क्षमता हिंदी, इन सभी बिंदुओं पर हमें बच्चों का असेसमेंट लेना है. इफ यू टॉकिंग अबाउट क्लास फर्स्ट लेवल, सो जब आप अपने सभी क्लासेस के बच्चों की डिटेल्स इसमें फिल कर देंगे तो आपके पास after entry level of the assessment we have the exit level of assessment at the last of the session. So now we have to do this assessment. Here we have the year end assessment of oral language ability of English. We have 4 level 1, level 2, level 3, and level 4 of language ability assessment. For example, you can see here the oral language ability in English. We have the point hesitation, converse with friends and class teacher about her needs surroundings. If the student is there are 4 points. If the student is not able to do, if he is hesitating to initiate speech, struggle to ask question, speech is vaulting, and seldom respond appropriately. We have second point, sometimes initiate speech, and the third point, initiate speech very positively, and the fourth point is eagerly initiate speech, easily ask questions. So we have this 4 level, 1, 2, 3, and 4. We have to assess the student on these 4 points. So we will pick a point and we will conclude it further. Then second point we have talk about the prior print available in the classroom. क्या बच्चा इनमें से कोई भी किसी भी लेवल पर अगर बच्चा है तो आपको इन पॉइंट्स पर उसको असेस करना है एंड मार्क करना है. A class teacher is completely will fill this data very carefully so that किसी भी स्टूडेंट का जो असेसमेंट है वो सही तरीके से हो. The third point we have recite rhyme, song, poem with action. We have 4 points: L1, L2, L3, and L4. Reading ability in English we have in the same way. If we will assess the reading ability, आपके पास ये 4 points निकल कर आते हैं. इन points पर आपको students को assess करना है. After that, we have next is writing ability in English. If the student is basic writing abilities in English, we know that students are very struggling to write. So we have to grade the students in which level he or she. For example, if he or she writes word but with frequent spelling mistakes, or write words with some spelling mistakes, or write words correctly, legible handwriting, or uses some punctuations. Or the fourth point, writes word with correct spelling, distinct handwriting, or proper punctuation. Any 4 points पर जिस भी points पर आप बच्चे को assess करना चाहते हैं उस point पर आप click करेंगे so that it will assess correctly. This is the writing ability in English. We have these points. After we have the numeracy skill. Numeracy skill जिसमें बच्चों को हमें basic counts, objects up to 20,
Is he or she able to count up to 20 correctly? क्या उसको गिनतियां प्रॉपरली आती हैं? इन बेसिस पर हम काउंट करेंगे, बच्चे को एसेस करेंगे. Counts up to 20 or demonstrate the concept of numbers up to 20 through representation, or place a random set of numbers up to 20 in correct order, or compare two numbers and identify the relations as less than, more than or equal to. किन्हीं भी इन 4 पॉइंट्स में से अगर बच्चा किसी भी एक स्टेज पर एग्जिस्ट करता है तो यू विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. After that, you have to complete this numeracy skill assessment. Then we have these points: read and writes up to 99. Second point, we have using addition and subtraction of numbers up to 9 daily life situations में. Is he or she able to do this kind of calculation? Throughout the year आपने उसकी जो प्रोग्रेस को जज किया है, उन बेसिस पर आपको बच्चे को ग्रेड देने हैं. आपको ग्रेडिंग करनी है कि बच्चा क्या इस कैपेबल है, बच्चे की क्या एबिलिटीज इतनी ग्रो हुई है थ्रू आउट द ईयर, फ्रॉम द एंट्री लेवल टू द एग्जिट लेवल. क्या बच्चा एबल है इन सब चीजों को कर पाने के योग्य है? Is estimate the verify length using non-standard, non-uniform units like hand span, foot step, fingers, etc. There are so many points given in this assessment, and this assessment is a very important for the every child in this school. इसके बाद आफ्टर न्यूमरेसी स्किल वी हैव मौखिक भाषा क्षमता आकलन, बच्चों का जिसके अंदर आपको मित्रों और शिक्षकों के साथ स्वयं की आवश्यकताओं और परिवेश पर वार्तालाप. बच्चा किस स्तर पर है, आपको इस पॉइंट्स पर बच्चों को मार्क करना है. कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्रियों पर चर्चा करना. क्या बच्चा उन पर चर्चा कर पा रहा है? क्या बच्चा उनको पढ़ पा रहा है, जो FLN में भी बात की गई है? क्या बच्चा जो मुद्रित सामग्रियां हैं जो कक्षा में दिखाई गई है, क्या बच्चा उनको प्रॉपरली समझ पा रहा है, पढ़ पा रहा है? किस लेवल पर बच्चा स्टैंड करता है? इसके बाद पठन भाषा आती है. क्या बच्चा लिखने के साथ साथ मौखिक भाषा के साथ साथ क्या पढ़ भी पा रहा है? क्या अध्यापक और अध्यापिका द्वारा दी गई कमांड्स को वो समझ पा रहा है? इज ही और शी एबल टू डू दिस? क्या वो बिना हिचकिचाहट के समझ पा रहा है? इन सभी पैरामीटर्स पर, इन सभी लैंग्वेज असेसमेंट एबिलिटीज पर हमें उसे बच्चे को असेस करना है, एंड वी हैव टू पॉइंट वन बाय वन. लेखन भाषा, इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है क्लास फर्स्ट का, लेखन भाषा क्षमता. इसके अंदर देखिए मूलभूत लेखन योग्यताएं दी हुई है, जिसके अंदर बच्चे को शब्द लिखना, वर्तनियों की त्रुटियां होना या वर्तनियों की कुछ अशुद्धियां होना, बच्चों को शुद्ध रूप से लिखना आता है या नहीं, या शुद्ध वर्तनी के साथ बच्चा लिख पाता है या नहीं. इन सभी पॉइंट्स को आपको टिक करना है. इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बच्चा एग्जिस्ट करता है. Then after that you will submit this assessment level. When you will submit this, this is a particular of one student. You have to do it with throughout the entire students in your class. आपकी क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चों का ये असेसमेंट आपको वन बाय वन करना है. फॉर एग्जांपल यू हैव 40 स्टूडेंट्स, सो वन स्टूडेंट्स के सारे लैंग्वेज स्किल्स को आपको असेस करना है, इन पॉइंट्स को फिल करना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट इट. Then you have to submit it. You can see here entry level assessment if you have done, it will show like this updated, and then year end assessment जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर उन सभी पॉइंट्स को आपने सही तरीके से भर दिया है, it will show updated the year end assessment. In some case there is a mid term assessment also. Mid term assessment भी आपको दिखाया गया है कुछ क्लासेस में. So if you have the assessment taken in the December or November, you can fill it the mid-term assessment also, and after that you have to fill this at the end of the February or before the February, this year-end assessment of the class first. When you will submit all the assessment of every student, then it will show you the report also like this. You can see here we have the report of the number of students you have assessed, their gender, their categories, and their admission number, and all the final conclusion you will get from here. In the same way, this is about first and second. In the same way, you have to assess the class second and third. Assessment for classes second and third also we have
due to the technical issues of class third assessment level is not able to uh, see properly. I have tried so many times, but class third level assessment is not coming on the screen properly. So I have taken here class 2 level of assessment. So here we have class 2. I have entered the details. If the teacher has done correctly entry level of assessment, then it will show like updated. Then you have to do the year end assessment. This is of class 2. We have different parameters, different points here on which we have to assess the children. First is oral language ability in English, in which you have to see whether the student is conveys and talk about the print available in the classroom. We have 4 options available here: able to express properly, converse with inappropriate speed, or speak with clarity about print in 2 or 3 short sentences, or talks or converse covering the main idea of the print. इन सभी पॉइंट्स पर आपको बच्चे को assess करना है. Oral language ability in English, whether he is able to speak properly in the class. You can take a group discussion of the students. You can assess not only a single child, but you can take as a whole that whether the student is doing well, is able to communicate in the class properly, he is responding in the with the teacher or not, how we communicating. कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, वो किस वजह से, उनको किस तरीके से हम मेन स्ट्रीम में लेकर आए, बच्चों को किस तरीके से इंगेज करें. टीचर इसी दौरान कुछ एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवा सकता है सो दैट बच्चे अपना लेवल अप कर सके. This is about the oral language ability in English. Then we have reading ability in English, whether the students read with narrate, retell the story from children literature textbook, क्या वो अपनी textbook को properly पढ़ पा रहा है. This is a throughout, and this is a very precise, you can say very detailed assessment of a children. If you will do this, you will know the basic problems or basic things about the children. बहुत बारीकी से इस assessment level को बनाया गया है. So every teacher has to do this assessment at the end of the year. Writing abilities English and numeracy skills you have to assess. If the student is right up to the 999 countings, Excuse me, sir. is he or she able to read it properly? 1 minute, sir, Yes, ma'am. please. I'm sorry to interrupt, but then I feel because time will run up. So what's it? Need not discuss the rubrics here because the rubrics is already given and the teacher assessing will be getting it. I would like to interrupt here and just share a view for those who have not done that these rubrics are to be actually taken care of by the teachers, subject teachers. Rubrics is in the PIMS, subject wise. See, the oral rubrics, each topic has at least 4 that sir was showing. So 1, 2, 3, 4 if we say, and the child, subject teacher will mark it as oral, first one, 1, 2, 3, 4. So if the child is in one level or the second level or the third level or the fourth level, like that. For the second rubric, similarly for oral, then for reading, then for writing. So we make a mark slip like this, then hand it over to the class teacher. For numeracy, again, it is the similar way. If everybody is being able to see or not, you see. Then this is the hard copy that I am showing, and for Hindi also. Yes, ma'am. मैं थोड़ा यही शेयर करना चाह रही थी कि ये सब्जेक्ट टीचर्स ग्रेड शीट बनाकर क्लास टीचर को दे दे, क्लास टीचर अपने लेवल पे पीआईएमएस पोर्टल में इसको अपलोड करे. बस इतना ही अगर है तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप सर. हिमांशु सर, मैडम एक सेकंड. हिमांशु सर आपका बहुत ज्यादा, हिमांशु सर का बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है मामला. आप एकदम टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसको बाइंड अप कर दीजिए, है ना, फटाफट, ताकि दूसरे को टाइम पूरा मिल सके. यस सर.
So this is the assessment level I have shown to you कि किस तरीके से सभी टीचर्स को असेसमेंट लेवल PIMS पोर्टल पर अपलोड करने हैं एंड अपडेट करने हैं. फाइनली यू विल गेट द रिपोर्ट ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स एट द लास्ट ऑफ द PIMS पोर्टल लेवल. इसी में ये आपको रिपोर्ट्स एट द एंड ऑफ द मिल जाएंगी. सो इस तरीके से ये PIMS पोर्टल पर सभी बच्चों का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. सो आई एम कंक्लूडिंग माई talks. So thank you so much for this opportunity to for this exit level of assessment. Thank you so much to all the teachers and principals and HMs. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Excuse sir. me, Diksha ma'am. Thank you. On behalf of Diksha Yes, ma'am, I am requesting Minu ma'am to please join and share your any points that you have about the forthcoming Kaptan Bulbul Utsav. मैम क्लास 3 का PIMS काम कर रहा है क्या? हम लोग यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वर मैंने इशू. शुरू में ही मैंने कहा ना, उसमें कुछ अभी टेक्निकल इशू है. ये आरओ लेवल से या कुछ जहाँ से भी ये ठीक हो जाएगी इशू, आई थिंक आरओ लेवल से ही होगा, तो फिर वो पोर्टल में अपलोड होगा. तो मुझे जैसा लगता है कि ये चूंकि क्लास 3 का फाइनल एग्जाम है ना, सेक्शन एंडिंग, उसके बाद ही शायद ये होगा. ठीक है सर, anything will be there, will be updated. Thank you. Minu ma'am, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good morning, respected cluster in charge, Mr. Santosh Soni sir, principals of various Vidyalayas, headmasters, headmistress, and learned teachers. Here I am to brief you about the upcoming and the grand program which we are going to have under cluster level, that is Cups and Bulbul Utsav, to be held on 24th of this month, February, at KB Panagar. Now, some of the things which I am going to share. Now, myself and Pinky Madam of Panagar have been coordinating with each other. I had whatever queries she had, I had cleared about all the queries and all the things which has to be done, because ma'am is new and she's not in this Cups and Bulbul. So now we'll be having the program on 24th of this month at Panagar, and all the things Pinky ma'am has shared the Google sheet. I think hope all the schools have completed that Google sheet. They have filled up the forms, I think, ma'am. So we have got 4 programs. Like there will be 10 cups and 10 bulbuls. Now number of escorts will be 2 definitely. That is, 1 will be flock leader and 1 cup master. And reporting time is 8 o'clock sharp. All these things Pinky ma'am have shared in the group, Nipun group. Then in this we'll have 4 programs, that is tree decoration for bulbul, then knotting, drawing and painting, and group song. Now tree decoration we have for the bulbuls, and the participants will be 4. And for the noting we have 3 cups and 1 bulbul. And then we have drawing and painting, in which 3 cups are there and 1 bulbul. And group song, 4 children, means 4 cups and 4 bulbuls, and altogether 8. There will be no extra student for playing the instrument or anything. Teacher can play the instrument, and participant will do whatever things are needed. Like in one program, only 1 participant will be there. Means 1 child can participate only in one of the program. Okay, participants should not repeat. So everybody should get their chance. And the things to be brought by the participant, first of all, there should be complete uniform. Teachers, please check that their uniform is complete. They should bring with them knotting rope, color, painting materials, writing boards for drawing and painting competition, then small notebook and pen, pencil and eraser. So all these things they should bring it. And the rubrics for the judgment, like judgment criteria, Pinky ma'am, I have shared in your personal group. Please check it today itself. Yes, ma'am, I've got that this morning. Yeah. You have So shared it, ma'am. what you do, you please share it in the group also, so that the teachers can prepare accordingly. Right, ma'am. Ma'am, for group song, there is a patriotism and folk song theme. Yeah. And for drawing and painting, is there any theme we can share, like a be kind to nature or cleanliness, whatever?
you suggest, ma'am? Yes, ma'am. Sure. Yes, you can. That is up to you, ma'am. Okay. That's fine, ma'am. Okay. Then like tree decoration, we'll see the materials to be used, proper materials, and then the presentation we'll see, and the concept. Okay. हेल्थ पोर्टल पर कुछ काम होता है? Okay, ma'am. And Ma'am, one of tree the decoration training, what they have done, what the purpose. Ma'am, in tree decoration, Yes, they will ma'am. use Yes, ma'am. best out of waste material while decorating that bulbul tree. They can, yes, ma'am. They can use it. Yes, they will bring the Madam, materials. They know they have been taught in the camp, know how to decorate bulbul tree. So they know it, मैडम and they will bring it. पिंकी मैडम 1 मिनट पिंकी मैडम एक आपसे ये जानकारी लेना है कि जो जजेस बनाना है कॉम्पिटिशन्स के वो आउट ऑफ द स्कूल होना चाहिए या अदर स्कूल्स के स्काउट गाइड्स के टीचर्स हो या हमारे ही स्कूल के जो टीचर्स है सीनियर स्काउट गाइड के उनको बनाया जाए क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ किसी तरह का कोई सब ट्रांसपेरेंसी हो और किसी को ये ना लगे कि भाई जो भी डिसीजन हुआ है वो फेयर नहीं है इसलिए आपसे इसमें थोड़ा सा बता दीजिए पिंकी मैडम को सर इसमें क्या है ना सर जब हमारा ये अपने स्कूल लेवल पे प्रोग्राम क्लस्टर लेवल पे होता है तो हम अपने स्कूल के ही टीचर्स जाते हैं तो हम जब जजमेंट के लिए देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आसनसोल से हूँ तो मैं यदि किसी चीज के लिए जज बनी हूँ तो मैं अपने आसनसोल को और एक नेबरिंग जो स्कूल जैसे मेरा चित्तरंजन हुआ ये दोनों स्कूल को मैं नहीं जज करूंगी बाकी जो 3 होंगे वो जज करेंगे उससे जो और भी टीचर्स होंगे वहाँ पर जो अपने स्कूल को और जो बगल वाले अपने स्कूल टेक्निकल स्कूल को हम लोग जज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे बाहर से तो टीचर्स मंगाना मुश्किल होता है सर आज कुछ हम लोग अपने ही स्कूल के जो सीनियर टीचर जो स्काउट एंड गाइड में हम लोग उनको भी ले लेते हैं और जो स्कॉट टीचर्स जाते हैं हम लोग उनका ही यूज करते हैं सर इस तरह में हम लोग जितने भी निपुण का प्रोग्राम होता है ना कोई भी जैसे लिटरेरी हुआ या कल्चर हुआ सब में ज्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं अपने टीचर को ही रखते हैं ये सॉइल तो हमारा नहीं ठीक है मैडम आप पिंकी मैडम तो बसाक सर को समझ में आ गया है ना आपको तो उसी हिसाब से प्लान कर लेना कहाँ दिखाइए है ना वो आ गया बसाक सर Soil. Yes, Pinky ma'am, मैं आऊँगी ना मैं आऊँ पर yes. I was asking ma'am, I was. Okay, thank you so much, madam. Thank you very much. सिर्फ ड्राइंग के लिए पेपर्स हम लोग मैम ड्राइंग के लिए खाली पेपर्स हम लोग को प्रोवाइड करने हैं बाकी बच्चे ड्राइंग के सारे चीजें इंस्ट्रूमेंट वगैरह ग्रुप सॉन्ग के लिए सभी लोग अपने स्कूल से लाएंगे राइट हाँ ले आएंगे मैडम लेकिन जैसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट हुआ हारमोनियम हुआ या ट्रिपल यदि कोई है तो आप अपने स्कूल से प्रोवाइड करने बच्चे क्योंकि बड़ा बड़ा चीज को लेकर दूर से जाना मुश्किल छोटे बच्चे जाएंगे ना मैडम छोटे बड़े बच्चे तो नहीं ना जाएंगे कि कैरी करना उनके लिए इजी होगा तो वेन्यू स्कूल है यदि वो प्रोवाइड कर दे और छोटा चीज जो इंस्ट्रूमेंट उन लोग यूज करना चाहते हैं वो अपने स्कूल से ले जाएंगे लेकिन ज्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं ना वो ढोलक हुआ या ट्रिपल हुआ या हारमोनियम मेनली ये सभी यूज करते हैं तो यदि स्कूल दे दे तो अच्छा रहेगा हमारे स्कूल में जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है उसको सब लोगों को उपयोग करने के लिए आजादी है कोई प्रॉब्लम थैंक यू सर यस सर थैंक यू सर क्योंकि सबका स्कूल तो सबका है हमारा ही है ठीक है थैंक यू सर तो ये थैंक यू सर तो ये सब कुछ थे और कोशिश करना है कि छोटे बच्चे हैं तो जितने जल्दी हम लोग प्रोग्राम को खत्म कर सके और वापस क्योंकि दूर दूर से भी सब आएंगे और बहुत ज्यादा इसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है बस इतना ही है सॉन्ग एक तो हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गया मैडम फिर ग्रुप सॉन्ग है जिसमें कि मेलोडी और रिदम और प्रेजेंटेशन तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको भेजती हूँ तो आप प्लीज नोटिंग के लिए मैडम नोटिंग के लिए 4 नोट्स यूज करेंगे तो कुछ नोटिंग कौन नोट्स के लिए ना नोटिंग के लिए उन लोग खुद का अपना ये लेकर आएंगे रोट्स लेकर आएंगे और नोटिंग के लिए मैडम एक चीज आप देख लीजिएगा कि आपके वहाँ स्कूल में यदि कोई है एक्सपर्ट जो नोटिंग को देख सकते हैं या कोई दूसरे स्कूल के भी टीचर जाएंगे तो ठीक है तो ठीक रहेगा उसको जजमेंट के लिए क्योंकि नोटिंग है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और कौन से नोट्स दे सकते हैं मैडम एकदम इजी वाला कुछ भी दे सकते हैं 2-4 दे सकते हैं मैडम सबसे इजी वाला मैं ये आपको बता दूंगी ठीक है ये लाल ब्रीफ नोट हुआ ये सब मैं देख कर मैं बता दूंगी इनके लिए बहुत टफ नहीं रहता है ये छोटे बच्चे हैं ना इनका ये बहुत इजी वे में ही इनको ये तो उत्साह हो गया ना मैडम इन लोगों को कोई टेंशन हुआ नहीं होना इन लोग उत्साह हुआ खेल कूद कर रिक्रिएशन करके आना है तो ये तो खेल में ही कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा ठीक है
और तो ऐसे कुछ नहीं है सब। थैंक यू सो मच मैम। मैम थैंक मैं यू अपना सिंसियर एवरीवन। थैंक्स जयंती मैम को और मीनू बाला मैम को दूंगी, जिन्होंने, और कंचन मैडम ऑल्सो, कंचन मैडम फ्रॉम केवी अंडाल। मैडम कंचन मैम ने, मीनू मैम ने और जयंती मैम ने मुझे बहुत गाइड किया। एज आई डोंट हैव एनी ट्रेनिंग इन कप्स एंड बुलबुल, बट वी आर स्टिल होस्टिंग द इवेंट, और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया मैम। वैसे ही हम लोग काम करेंगे जैसे आपने कहा है मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. And Diksha ma'am is requested to थैंक please यू मैम। continue with. थैंक Thank यू you, सो Meenu मच। ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम, may I take leave? जयंती मैम, with your permission? Yes, ma'am. Please, जयंती I'm मैम, requesting Diksha ma'am to please continue with. Meenu ma'am, thank you so much. Diksha ma'am, please थैंक यू मैम, आई continue एम with. लीविंग। ओके मैम। Thank you, ma'am. I would now ask Mr. Vinod Yadav sir to please share his suggestions about today's event. I request Mr. Vinod Honorable. Yadav sir, Principal I request. KVCRP. हाँ. एक्चुअली में विनोद सर कहीं गए हुए हैं, थोड़ा अर्जेंट काम था। अच्छा तो सर, अगर अभिजीत सर कुछ देना चाहें, बोलना चाहें, तो अभिजीत सर को आप इनवाइट कर लीजिए। Yes, sir. May I now request Mr. Abhijit Shah sir, Principal KV Bardhaman, to share his valuable impressions regarding today's event. क्या लिखेगा? ये लिखा जाता है कि मैं प्रैक्टिकल कॉपी और ये नहीं दे रहा था इसलिए नहीं कर रहा था। वो भी नहीं है तो सोनी सर आप हैं यहाँ पर? हाँ सर, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ सर, मैं उसके बाद बढ़िया से मैं बता पाऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद और कोई भी प्रिंसिपल जो यहाँ पर हो? प्रिंसिपल चितरंजन लिख दीजिए कि मैं खाना खाने चल गया था, तो थोड़ी होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? विप्लव शाह सर, CMRI। कोई नहीं, चलिए आप अपने कोई PRT से करवा लीजिए, जो भी सीनियर PRT है। पिंकी मैडम आप ही बोल दीजिए, कुछ अपना इम्प्रेशन दे दीजिए कि क्या अपने को नेक्स्ट सेशन में करना है, क्या अभी तक हमने किया है शॉर्ट में। थैंक यू सर। ऑनरेबल क्लस्टर इंचार्ज सोनी सर, सभी प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस KVs एंड यस, and all the senior most PRTs and dear PRTs. आज का जो 4th निपुण मीटिंग था वो काफ़ी अच्छा रहा मैडम, और जो भी नए PRTs जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशन में अपने स्किल्स को शो किया है, किस तरह से उन्होंने किस तरह से केवी कल्चर में वो ढल गए हैं। बहुत ही जल्दी उन्होंने समझा है विभिन्न टॉपिक्स, जैसे कि एग्ज़ाम, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, MTP, आपका TLM का प्रयोग, क्लासरूम मैनेजमेंट, और जो भी चीज़ें उनको आते के साथ मिला है मैम, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है औरों को, और खुद भी समझा है। तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल, बहुत एनरिचिंग था न्यू PRTs के लिए, और वो भी खुलकर सामने आए हैं ताकि मीटिंग्स में अपने प्रतिभा को जो गाइड किया जयंती मैम, जो स्टार्टिंग में आपने पिछले निपुण मीटिंग का जो रिपोर्ट बताया, जिसमें आपने सारी बातें रखी, वो भी बहुत ही जानकारी पूर्ण थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी मैम। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, Mr. N.K. Soni sir, to provide his valuable impression on this meeting. Thank you so much, sir. जस्ट आफ्टर 1 मिनट मैं रूम में पहुंच रहा हूँ बाहर से, तब तक कोई हैंडल कर लीजिए। 1 मिनट ओनली 1 मिनट। So I think with your permission,
अच्छा जयंती मैम, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट कब्स एंड बुलबुल उत्सव कि इसका जो टाइमिंग है मैम, मतलब जो ब्रेकअप्स कब तक फिनिश हो जाना चाहिए मैम? ये पूरा कार्यक्रम एक दिन का है, जो स्टार्टिंग तो 8 बजे से है मैम, इसका एंड कब तक कर दिया जाए ताकि लोग अपने अपने मतलब पहुंच जाए केबीस में वापस? मैडम एक बात थोड़ा सा देखिए, मैं आपसे बोलूँ इस बारे में। हाँ बोल दीजिए। कोई भी प्रोग्राम अगर हमारा स्कूल वेन्यू है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहना चाहिए प्लानिंग है कि कब कौन सा प्रोग्राम करवाएं और कितनी जल्दी और अच्छी तरह से करवा पाएं। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी एक्टिविटी हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये एक्टिविटी आधे घंटे करना है तो आधे ही घंटे करना है। हो सकता है उसमें 40 मिनट लग जाए और हो सकता है 20 मिनट में भी हो जाए। तो ऐसे बैलेंस काम कर करके रहा मैं कोशिश करिए ऑनलाइन कि हूँ 4 ना बजे मीटिंग में, तक हम हाँ खत्म सर, कर कोशिश करेंगे सर। मैं मीटिंग में ऑनलाइन हूँ तो टाइमली इस पे कैसे डिस्टर्ब कर सकता या हूँ? आसनसोल या दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर बच्चे 6 बजे तक पहुँच जाएं, ये टारगेट होना चाहिए। ओके सर। सर साइमल्टेनियसली और द इवेंट्स किसी विल से टेक बोलो प्लेस यहाँ ना कोई सर? आए नहीं अंदर और ये 4 बाहर बजे जो तक भी चिल्ला हो रहे जाता सब है टीचर तो अपने 2 क्लास घंटे में में जाएं। आराम से अपने अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। थैंक यू सर। यस मैं अभी अवेलेबल हूँ, अगर आप लोग तैयार है तो। Yes, हाँ शॉर्ट में ही sir, कर। please. I request you to please continue with sir. यस Yes, sir, please. नमस्कार मैडम, सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ये वर्चुअल मोड में भी आज जो हमने मीटिंग की बहुत सक्सेसफुल रही, और जैसा कि हमेशा हमारे क्लस्टर इंचार्ज सोनी सर का जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कुछ भी हो बच्चे की लर्निंग इंश्योर होना चाहिए, चाहे आप टीएलएम यूज़ करें या ना करें, कहीं ज़्यादा समय देना पड़े या कम समय देना पड़े। मेन मूल मुद्दा हमारा ये है कि हम जो बच्चे को सिखाने जा रहे हैं वो बच्चा किसी भी तरह से सीख जाए, चाहे हम उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें या ना करें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग में ही सर ने संकेत दिया था, और हमेशा इस तरह के जो गाइडेंस है सर हर निपुण मीटिंग में देते रहते हैं। तो नए जो टीचर्स ज्वाइन किए उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली हमें कोशिश तो यही करना है कि हम मान लीजिए सारे ज़माने की टेक्नोलॉजी उपयोग करें, सारे टीएलएम महंगे महंगे ख़रीद लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे की लर्निंग इंश्योर नहीं हुई, वो कुछ सीख नहीं पाया, तो ये सब कुछ बेकार है। तो पर्सनली मैं जैसे कल ही एक क्लास 4 में गया था और पिनाचियो वाला चैप्टर था, ऑब्ज़र्व किया मैंने, बच्चों से पूछा तो बच्चे 40 बच्चे होते हैं, 40 में से केवल 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो उसके जो कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, 10-12 समझ पाते हैं। सभी मेरा मतलब है कि हर बच्चा चाहता है सीखना, और हर बच्चा चाहता है कक्षा में खड़े होकर बोलना, लेकिन इस तरह का माहौल वातावरण देना केवल और केवल शिक्षक के ही हाथ में है। शिक्षक मैदान का असली खिलाड़ी है, इसलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद टीचर्स मस्ट बी एंश्योर्ड। इसके लिए आपको भय मुक्त वातावरण अगर बच्चों को देंगे तो वो बच्चा जो है निडर होकर के आपके साथ कोई भी बात करने में, किसी भी प्रकार की चीज़ को शेयर करने में वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा। किसी बच्चे को ये कंफर्टेबल फील करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलने के अवसर देना, उसके डाउट्स को क्लियर करना, जहाँ जैसे टीएलएम की ज़रूरत है, जहाँ जैसी वस्तु की ज़रूरत है वो उसका उपयोग करना, लेकिन हर बच्चे के साथ ये होना चाहिए जिसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। अगर ये हम नहीं कर पाए तो फिर सारी जो चीज़ें हैं, सारा सिस्टम है, उसका कोई मतलब नहीं है। कि पूरा सिस्टम, पूरी संस्था, पूरा केवीएस और गवर्नमेंट की योजनाएं इसीलिए काम कर रही है कि हर बच्चा सीखे, हर बच्चे का अधिकार है सीखना। इसलिए ये नहीं है कि आज ये बच्चा वीक है या ये नहीं सीख पाया, हम पहले से ही किसी बच्चे के बारे में निर्णय ले लें कि ये तो बहुत वीक है, कमज़ोर है, कर नहीं पाएगा। मैं एक लास्ट में अपना खुद का ये उदाहरण दे देता हूँ कि मैं क्लास 1 से लेकर 10th तक हमेशा टॉपर रहा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट रहा, लेकिन 11 और 12 में रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। फिर ग्रेजुएशन में एक समय ऐसा आया कि नकल करने की भी नौबत आ गई और नकल कर नहीं पाया, लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव आदत नहीं थी। लेकिन
जैसे ही अलर्ट हुआ, अच्छे शिक्षकों का साथ मिला, यूनिवर्सिटी भी एक नहीं दो दो तीन तीन बार टॉप 5 में रहा हूँ, तो मैंने ये फील किया है कि कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान और कोई बच्चा बहुत कमज़ोर नहीं होता। वही बच्चा जो है उसके अंदर ईश्वर ने सारी क्वालिटीज़ और सारे क्रोमोसोम सबके एक जैसे होते हैं। बस हमारा समर्पण कितना है, हमारा उस बच्चे के साथ बिलोंगिंग और इन्वॉल्वमेंट कितना है, अगर ये हम इंश्योर कर लें और सोनी सर जैसा बताते हैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी। और आज का ये जो कार्यक्रम हमारा इसका जो ऑनलाइन रहा है, ये जो मीट, मुझे लगता है कि सब लोग अगर इसे इसकी जो खास खास बातें जो निकल के आ रही है उसको नोट करके उसको अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम सार्थक बहुत कुछ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you for your inspirational words and so much of your experience that you shared with us. सारे नए टीचर्स और हम लोग सारे लोग आपके बहुत आभारी है, आप जो हमारे साथ इसको शेयर किए। थैंक यू मैम। Thank you so much once again. Now I would request Kajal ma'am to please cluster in charge sir, principal sir, to please give your blessings sir. विनोद यादव जी, Vinod sir, please. विनोद सर का हैंड। I would. Yes, sir. Please. We are quite. विनोद सर, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं Listen आपका। to you, sir. Please, Vinod sir. जी सर नहीं आ रहे थे इसलिए सर प्लीज आप शेयर कीजिए अपना व्यूज। I request you on behalf of the whole team. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Am I audible, ma'am? Yes, yes, sir. Please. Most respected cluster in charge, Sri Santosh Soni ji, and Sri Nand Kishore Soni sir, Principal KV Panagarh, principals of other Kendriya Vidyalaya, and dear teachers. Today we are in fourth and last meeting of Nipun. And what time I have spent with you people and what I have understand with the primary goal that we have to fulfill the academic development of our children. That is the most important part. And one motive that is very interesting, what sir suggested earlier in the first Nipun meeting, that is each one teach two. I think I am correct? Yes, sir. Each one teach two. That is a very good motive. This is my second meeting with all the teachers teaching in primary classes. 5 मिनट में ओवर हो रहा है लास्ट। Especially what sir is suggested, what is the objective of this meeting, and what just before me Soni sir is guiding regarding development of our children. GSP the basic need is school program to motivate the children, to provide them proper facility so that a student can learn with their own pace. That is the main motive of NEP, the main motive of NCF, and the main drawback what I found in my Vidyalaya, in so many Vidyalaya, it's maybe a negative comment, but it's a reality. Most of you people are not aware about the educational goal, about the curricular goal, what is the competencies, and what is the learning outcomes, what are the differences, how we achieve them. That is the most important part what I feel during inspections and day-to-day class observations. That is a very important document, NCF, for foundational stage, for secondary stage. From this platform, I am requesting you all teachers, once you go through the complete document. It's very important. And I also request to our cluster in charge, sir, that one training session may be conducted
on implementation of NCF in Kendriya Vidyalayas, especially in our cluster. And I think you are agree with me. The concept that each one teach to is the best concept. And if everyone follow that one, I think at least in your Vidyalaya, you are able to promote the learning of at least two to four students. And in every class, it's a reality that in every class, there are at least 3 to 4 children who are suffering either in reading, writing, or mathematical calculation. It's a reality. And those children needs our support. It's most important part. If you are able to guide those children, your job is successful. You are a successful teacher, and you have to do for that children. And the last point I want to share with you that during Nipun meeting, either it is online or offline, uh, I was in the opening session. Soni sir has put his view and the targets, the objective of today's meeting. The most important things you share at this platform, the things that you are doing in your Vidyalaya, the practical situations, not the bookies knowledge. Don't read PPTs and just line by line. Everyone is knowing that one. The practical situation should be shared. The problem that you are facing, you should share with your colleagues. The solution that you are providing to the learners, you should share here so that everyone who is new in this teaching profession, so many new teachers are joined Kendriya Vidyalaya, and a very good initiative. I thanks to Soni sir that he added the new teachers along with the old one so that this collaboration, the collaborative effect should promote the learning of our children and the glory of our cluster, our Kendriya Vidyalaya Sangathan. That's all from my side. I apologize that I am not able to be with you for full time because of some administrative issues. But at last, I think at the last moment, I have joined you so that I could put my views in front of you. Thank you very much. No issues, sir. Thank you so much for sharing such valuable information and the points that you have discussed with us. We'll surely try to pay much attention to each one teach two program. I also emphasized in the beginning only and requesting all the senior PRTs to please make aware the new teachers about the each one teach two and implement it this February only. I have started it in my school. And the other point that you have discussed, sir, will surely, in the guidance of our principal, cluster in charge, Mr. Santosh Soni, sir, will try to put it in the next session. Thank you so much, sir. Now, Diksha ma'am, please continue. I would now request Cluster in charge and Venue Principal, Mr. Santosh Soni sir, to please give his blessings. थैंक यू मैडम. मुझे अभी हमारे रिस्पेक्टेड सोनी सर, यादव सर, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने बातों को बोला, ऐसा लगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो इन लोगों ने बोल दिया. बहुत खुशी होती है कि हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो लीडर हैं स्कूल के, वो इतना प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं. थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कहीं भी मिल जाएगा, ढेर भरा पड़ा हुआ है. नेट हो, एनईपी है, निपुण के इतने बड़े बड़े इतने सारे पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मीनिंग उनका नहीं है जब तक हम उसको समझे नहीं कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्या करना है हमको और क्यों कर रहे हैं. साइन करवाओ. मैं अपने स्कूल में भी हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी काम आपको दिया जाए, सबसे पहले ये सोचना है कि हम क्यों कर रहे हैं वो, और इसको करने से सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को क्या फायदा है और कैसे अच्छी तरह से हम कर सकते हैं. जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस हैं, उनके अलावा भी हम अपने
माइंड से सोचकर प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मोटिव है। और इसके लिए हमारे अंदर वो विश, हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि हमको करना है। जब तक हमारे अंदर से नहीं होगी, चाहे कमिश्नर आपको बोले, प्रिंसिपल बोले, डीसी बोले, कोई भी बोले, आप केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए, आपको क्लास में जाना है, आप करवाएंगे, ये कंपेटेंसी करवाना है वो करवाएंगे, लेकिन कितना आउटकम्स आया ये आप नहीं देख पाएंगे। तो यादव जी का एक बात बहुत ही अच्छा लगा, जो हमेशा मेरा एक ही फर्स्ट टारगेट रहा है कि हर क्लास में ये 2 या 3 स्टूडेंट जो हैं, एक्चुअल में हम उन्हीं के लिए आए हुए हैं। जो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है वो उन्हीं बच्चों के लिए खास तौर से हुआ है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, नेचुरली उनका एटमॉस्फेयर, उनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उनको वो स्कूल में ना भी आए तब भी पढ़ लेंगे वो। अगर हम बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, 5 या 6 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सबसे पहले हाथ ऊपर करते हैं कि हमको आ गया। अगर 50% स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, आपने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर दें, हमें बड़ी खुशी होती है टीचर कि देखो मैंने पढ़ाया, कितने सारे स्टूडेंट समझ गए। लेकिन उस समय हमारा ध्यान वो 4 बच्चों पे नहीं जाता जो चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, या तो सिर नीचे करके या आपस में बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और टीचर उन 50 या 60% टीचर को देख करके बड़ी खुशी होती है उनको कि देखिए हमने इतना कर लिया। तो मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हम उनको फोकस करें जिनको जरूरत है एक्चुअल में हमारे प्रैक्टिकली। इसके बाद जब वो बच्चे 4 बच्चे उस एवरेज लेवल पर आ जाएं, आपको लगे कि नहीं अब ये रीड कर सकता है, एटलीस्ट सही तरह से स्पीकिंग आ गई है, राइटिंग कर सकता है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका वो 4 बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से हमने छोड़ दिया है। और इसके लिए ये सोचना कि ये 3rd क्लास में तो 2nd वाले ने नहीं पढ़ाया होगा, 6th में आ गया तो 5th वाले ने नहीं पढ़ाया होगा। जिस समय आपको वो स्टूडेंट्स मिले, उस समय से उसके जो भी रेमेडीज हैं वो रेमेडीज आपको करना है। जो भी बीमारी है उसका इलाज उसी समय से करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो भाई 4th स्टेज पे आ गया है, अब इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, अब ये पढ़ने लायक नहीं है, ये माइंड में नहीं रखना है। और अगर हम कोशिश करें कि अभी तो बाल वाटिका भी स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग से ही बच्चों की हैबिट बनाना है। इवन मैं तो बोलता हूँ टीचर की भी हैबिट होना चाहिए। एक बार जो बच्चों की हैबिट बन जाती है वो हमेशा रहेगी, किसी भी क्लास में पहुंच जाए। उनको ऐसे एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो हैबिट में आ जाए, पढ़ाई लिखाई जो नॉर्मली हैबिट में नहीं होते बच्चों की। जितना इंटरेस्ट वो गेम्स स्पोर्ट्स में, मोबाइल में, रील्स में छोटे छोटे बच्चे आजकल देखते हैं, लेते हैं, उतने में से 50% इंटरेस्ट भी अगर वो थोड़ा सा सीखने में ले तो निश्चित रूप से हमारा टारगेट पूरा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी अच्छी तरह से सोनी सर ने भी बताया, और उनको धन्यवाद देना तो बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे जो क्लस्टर है, जो हमारा फैमिली है, सबसे सीनियर प्रिंसिपल हैं। और ये उनकी बातों से ही हमको शो हो जाता है कि कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितनी अच्छी तरह से वो बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट में केवल यही बोलूँगा, जो नए लोग हैं वो खुद भी सेल्फ मोटिवेट रहें। ऐसा नहीं है कि मीटिंग होगी तभी वो मोटिवेट होंगे, काफ़ी एनर्जी है उनके पास अभी, और वो कुछ भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो टारगेट वो बनाएंगे अभी इस समय वो अचीव कर सकते हैं। कैसे करना है ये भी वो जानते हैं। बस याद रखना है कि हमको वो 3 या 4 जो स्टूडेंट की बात हम बार बार कर रहे हैं, अगर उनको एक लेवल तक ला पाए हम, तो सबसे बड़ी सक्सेस आपकी वही होगी। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, घर से पढ़ के आ रहे हैं, उनको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। उनको पॉलिश कर सकते हैं आप कब, जब हमारा एक फर्स्ट टारगेट पूरा हो जाए। इसके बाद देखिए बच्चों
जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं वो सीख जाता है, उसको चेहरे को रीड करिए, कितनी खुशी होती है उस बच्चे को, और आपको उससे ज्यादा खुशी होती है कि मैंने इसको ये सिखा दिया। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और हम हमारा जो प्रोजेक्ट हमने जो लिया हुआ था ईच वन टीच टू वाला, वो कंटिन्यू करिएगा। और जो नए लोग आए हैं, यहाँ तो सभी लोग नए नहीं आए होंगे, बहुत सारे पीआरटी जो नए ज्वाइन किया है, उनको बताइए, सिखाइए, उनको मोटिवेट करिए। बहुत एनर्जी है उनके पास, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज उनके पास है। बस उस नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्रोच में चेंज करना है, बदलना है। उम्मीद है नेक्स्ट मीटिंग में जो फर्स्ट क्वार्टर की होगी, अप्रैल से जून के बीच में, वो आसनसोल में ही हम रखेंगे, और वो मीटिंग ऑफलाइन होगी। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी पूरा करिए। तैयारी का मीनिंग है क्या हमको करना है, केवल उस मीटिंग में हमको डिस्कशन करना है कि किस प्रोग्राम को कैसे करना है, जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं उनको अच्छी तरह से और कैसे ले सकते हैं। तो इस तैयारी के साथ अपने अपने व्यू लेकर के अप्रैल या मई में जब भी फिक्स होगी डेट, हम मिलेंगे और अच्छी तरह से डिस्कशन कर पाएंगे कि कैसे हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now I would request Ms. Kajal, KV Asansol, to give a vote of thanks to all the members present in the meeting. Kajal. Thank you, ma'am. Respected dignitaries, principals, and all senior most PRTs of the 9 schools in the cluster, and all the participating teachers, a very good afternoon to all. It is said that gratitude is the closest thing to beauty, manifested in an emotion. And for me, it's a matter of pride to propose the vote of thanks in this 4th cluster level meeting, Nipun meeting 2023-24. With my first thanks to the Almighty God, who gave us this opportunity to gather and work together for a mission, I sincerely thanks to our cluster in charge, Mr. Santosh Soni sir, for being a wonderful and caring host and arranging this 4th Nipun session meeting successfully. Sincere gratitude to Shri N.K. Soni sir, Principal KV Panagar, Shri Santosh Soni sir, Principal KV Asansol, Shri Biplab Sarkar sir, Principal KV CMERI Durgapur, Shri Vinod Yadav sir, Principal KV CRPF Durgapur, and all the dignitaries of the 9 schools who were prominent role models and path enlighters throughout the meeting. I also thank all the senior PRTs and participating primary teachers of the 9 schools for their valuable presence. Gratitude and appreciations to the various presentations by the different Kendriya Vidyalayas. Heartfelt thanks to Mr. Vinod Yadav sir, Principal KV CRPF Durgapur, and Mr. N.K. Soni sir, Principal KV Panagar, and Mr. Santosh Soni sir, Principal KV Asansol, for their kind and genuine suggestions and impressions of the meeting. Special mention to all the students, participants, for their wonderful performance. Thank you so much, dear students. I also thank Jayanti Mukherjee ma'am, senior most PRT, KV Asansol, Lovely Bhattacharya ma'am, music instructor, KV Asansol, Diksha ma'am, for their untiring inputs in the beautiful meeting, the technical experts. I thank our Shikha ma'am, KV Asansol, and all the other technical experts who gave their timely support and guidance to us. And once again, I thank Mr. Santosh Soni sir, the venue principal, for his blessing and being a wonderful host. Thank you, sir. At the end, I thank each and everyone again for their valuable presence and considerate inputs in making this Nipun cluster meet a success. Thank you, everyone. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everybody, for joining. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Jangan.